Om Jnanatimirandasya Gyananjala Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyasya Dashatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 सर वो अपना मोबाइल है साइलेंट रख देंगे मोबाइल साइलेंट कर दीजिए So they are all from Baroda congregation. Yes. Okay. New people, new devotees. I'm very happy to be here today and have the opportunity and privilege to address you. तो मुझे बहुत आनंद है कि यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ आप सबको के साथ सत्संग करने का मुझे मौका मिल रहा है. So you can see this very beautiful farm that we have here. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है कृषि है. But I would request don't come here as a tourist. तो मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ घूमने मत आइए. This is actually Srila Prabhupada said this is the final goal of our preaching. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे प्रचार का अंतिम उद्देश्य है. This is the solution for all the problems in human society. तो ये मानव समाज में जो भी समस्या है उनका एकमात्र समाधान है. We are all struggling, as Krishna says, that we are struggling so hard to get ahead in material life. तो हम सब संघर्ष कर रहे हैं भौतिक संसार में आगे बढ़ने के लिए. Prakriti stani karshati, that struggle for existence. तो अस्तित्व के लिए संघर्ष चल रहा है हम सबका. So just to maintain our bodies, that requires a lot of effort. तो शरीर को चलाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है. But we can minimize that effort by living naturally. तो ये संघर्ष कम किया जा सकता है जो हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं तो. And natural living means you live with nature and you live with the cows. तो स्वाभाविक जीवन का अर्थ है कि कृषि जो प्रकृति है उसके साथ और गायों के साथ जीवन जीना. As you all know, within the body of the cow are situated all the main devas. तो गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है. It has become very popular in modern Hindu society to worship the devas. तो आधुनिक हिंदू समाज में हम देखते हैं कि लोग देवी देवताओं की काफी पूजा करते हैं. Even though Krishna says Mayaiva vihitan hitan, that anything the devas can give you, they're getting from me. तो देवता जो भी हमें देते हैं भगवान कहते हैं कि वो मैं ही देने वाला हूँ. How many of you do business? How many? आप में से कितने लोग हैं बिजनेसमैन हैं? So you know that to make more profit, you cut out the middleman. तो आपको अगर ज़्यादा प्रॉफिट करना है तो मिडल में जो एजेंट है दलाल है उसको हटा देना है. So in Bhagavad Gita, Krishna is saying, yes, why go to the middleman? तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो मिडलमैन है उनके बीच में जो मध्यस्थ है एजेंट है उनके पास क्यों जाना है. Actually, Krishna says, dasyante jagya bhavita, that the devas are dasyante. Anything they can give, they're dasya, they're servants of something greater. तो जो भी देवता देते हैं पर वो किसी न किसी के सेवक हैं उनसे प्राप्त करके देते हैं. But when we live naturally, like here, we simply take care of the cows and all the devas are satisfied. तो जब यहाँ पर हम रहते हैं तो हम स्वाभाविक जीवन जीते हैं गायों की सेवा करते हैं और देवता भी संतुष्ट रहते हैं. And the devas give us the most natural and beneficial food in the form of milk. तो देवता हमें है सबसे लाभदायी वस्तु देते हैं वो है गाय का दूध. In Baroda, you will get mother dairy milk. तो बड़ौदा में आपको मदर डेयरी या अन्य डेयरी का दूध मिलता है.
diluted, they take out the nutrition and they put back artificial nutrition. तो उसमें से वो पोषक तत्व है निकाल लेते हैं और कृत्रिम पोषक तत्व उसमें डाल देते हैं और दूध को पतला करके देते हैं. But here you get real milk. तो यहाँ पर आपको शुद्ध दूध प्राप्त होता है. So Srila Prabhupada wanted actually every temple in ISKCON to have a farm. तो प्रभुपाद चाहते थे कि हर एक मंदिर जो है ISKCON का उनका एक अपना कृषि होना चाहिए. And then he said, then the temple, the devotees, the congregation, they will have fresh milk, grains, organic vegetables, everything natural. तो कृषि से उनको जो भक्त है सब गृहस्थ भक्त उनको दूध अनाज इत्यादि सब शुद्ध प्राप्त होगा. And he also said that why should we stay in the cities? हमें प्रभुपाद कहते हैं कि हमें नगर में रहने की क्या जरूरत है. Prabhupada said, a devotee, we would rather be on the banks of the Ganga, Yamuna, or Godavari, Kaveri, or Tapta. No, this is the place for fulfilling the goal of human life. तो मनुष्य जीवन को का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पवित्र नदियाँ जैसे गंगा यमुना गोदावरी इत्यादि के किनारे पर रहना चाहिए. But we come to the cities to invite people to live naturally. तो हम हैं सिटी में आते हैं लोगों को ये आमंत्रित करने के लिए कि आप है स्वाभाविक जीवन जीने के लिए आइए. Of course, someone may think, well, if I was to leave the city, what would I do? What would happen to my business? तो कई लोगों को लगेगा कि अगर मैं सिटी छोड़कर आ जाऊंगा तो मेरा बिजनेस का क्या होगा. But then we would do Krishna's business. पर फिर हम हैं कृष्ण के लिए व्यापार करेंगे. Krishna is a gopa. कृष्ण है गोप है. So this is what he does. This is what the Supreme Lord, he's giving us this example. तो परम भगवान है वो अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. So if everybody does Krishna's business, then the world will be satisfied. तो जब सब लोग है कृष्ण का ही कृष्ण के द्वारा दिया गया बिजनेस है वो करेंगे तो पूरे सब लोग संतुष्ट होंगे. Just like if you have a calm body of water. जैसे एक स्थिर पानी का जलाशय है. And you throw a rock in and it creates ripples that go outward. उसमें पत्थर जब डालते हैं तो तरंगें बनने लगती हैं. So if you throw one stone after another in the same place, the ripples reinforce one another. तो आप एक के बाद एक पत्थर डालते रहेंगे तो तरंगें और बड़ी होती जाएगी. But if I throw one stone here and another one over there, they will cancel each other. पर अलग जगह पर पत्थर जलाशय में डालेंगे तो तरंगे हैं एक दूसरे को मिटा देगी. So material life, we all have a different goal. तो भौतिक संसार में हमें बहुत सारे भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं. And we're all fighting to utilize the same resources. और हम सबको एक ही वस्तु चाहिए. And therefore we're canceling out each other. और हम सब स्पर्धा में लगे हैं तो एक दूसरे को मिटा देते हैं. We enter into conflict. इसलिए आपस में संघर्ष होते हैं. In the West they call this dog eat dog world. No. Maybe they also call it that in India. I don't know. So everyone understood that. कुत्ते जो आपस में जैसे लड़ रहे हैं. So Krishna consciousness means that we all have the same goal. All the stones are going in the same place. तो कृष्ण चेतना का अर्थ है कि जो जैसे पत्थर हम जलाशय में एक ही जगह पर डालते हैं सबका एक ही लक्ष्य है. As Krishna says, Yat karoshi arashnasi, yat juhosi darasi, yat tapasyasvi konteya, yat kurushvam madarpanam. He said, whatever you do it for me. तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि आप जो भी करते हैं तो मेरे लिए कीजिए. Whatever you eat, offer it to me. आप जो भी खाते हैं वो भी मुझे अर्पण कीजिए. Whatever you sacrifice and give away, whatever austerities you do it for me. जो भी आप दान देना चाहते हैं यज्ञ करना चाहते हैं वो भी मुझे अर्पण करके कीजिए. And then everyone will be in harmony. तो सब लोग हैं संतुलन में रहेंगे. When I was in the university, I had one laboratory assignment. तो जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब एक असाइनमेंट मुझे मिला. It was to study how different societies create an enemy so that they can unite the people in their country. तो वो जो असाइनमेंट ये था कि आपस में लोग हैं मतलब दूसरे के साथ जब लड़ाई होती है तो कैसे अपने लोगों को साथ में इकट्ठा करना है.
So for all of us to be united in a positive sattvic way, तो हम सबको अगर इकट्ठा होना है, एकजुट होना है, we have to understand that the enemy is material existence. तो हम सबका एक ही शत्रु है, वो है भौतिक अस्तित्व. But modern society promotes material existence. पर आधुनिक जो जीवन है वो ऐसे भौतिक अस्तित्व को ही बढ़ावा देता है. Modern society tries to tell us that everything we find in Shastra, it's all mythology. तो आधुनिक लोग तो यही कहते हैं कि जो भी शास्त्र में है वो सब कल्पनाएं हैं. Which means that Narada Muni and all these great sages, they got together and tried to figure out a psychological scheme to teach people basic principles of morality. तो उनका तो ये कहना है कि सब नारद मुनि इत्यादि जो भी लोग इकट्ठे हुए उन्होंने सबको कुछ मानसिक बातें सिखाई जिससे लोगों को कुछ नैतिकता सिखाई जाए. But we see the teachings of Narada, the teachings of Shukadev, the teachings of all the great personalities is telling us to worship the Supreme Personality of God. तो चाहे नारद जी हो या सुखदेव गोस्वामी हो और बड़े महात्मा हैं, सबकी शिक्षा यही है कि कैसे परम भगवान है उनकी सेवा या पूजा की जाए. And this is the actual purpose of human life. तो यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है. And this is what unites us all with a common goal. इसी से हम एकजुट हो सकते हैं, हमारे में एकता आ सकती है. Otherwise, there's so much disagreement and so much strife and so many problems. और अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे हैं असहमतियां हैं, आपस में संघर्ष है. So, Srila Prabhupada made such a great sacrifice to create this movement to unite the human society. श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही संघर्ष करके एक ऐसी संस्था बनाई है कि जो विश्व को जोड़ सकती है. Actually, we just read one quote from Srila Prabhupada this morning. तो आज सुबह ने श्रील प्रभुपाद जी का एक वाक्य पढ़ा. And Prabhupada said, Krishna is the farm acharya. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील भगवान कृष्ण जो है वो कृषि के आचार्य है. No, he is carrying a buffalo stick and Balaram is carrying the plow. No. तो बलराम जी है उन्होंने हल उठाया है और कृष्ण के हाथ में वो भैंस का जो सिंग है वो है. One time Srila Prabhupada says, you can't eat nuts and bolts. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप जो नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं मशीन के वो नहीं खा सकते. So most of you live in Baroda or Badodara, no? And so you go to the shopping mall. तो आप बड़ौदा में रहते हैं और आप सब है शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं. And so I ask everyone to do this experiment. Go to the shopping mall and see what is essential in that place. What is an essential item for living peacefully? तो वहाँ पर जाकर देखिए कि क्या वस्तु वहाँ पर मिलती है कि जो आपको जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है. You won't find any good quality milk. तो वहाँ पर आपको कोई अच्छा दूध नहीं मिलेगा. You won't find any organic grains. वहाँ पर कोई आपको शुद्ध नैसर्गिक अन्न नहीं मिलेगा. All processed food, fried, and only for satisfying the tongue. तो जीव को संतुष्ट करने के लिए वहाँ कई प्रकार के पदार्थ मिलेंगे जो तेल में तले हुए हैं या बनाए हुए हैं. And practically everything else is a luxury. It's not something we need. और वहाँ पर जो बहुत सारी वस्तुएं मिलते हैं वो सिर्फ हमारे ऐशोआराम के लिए होती है, हमारे आवश्यक वस्तुएं नहीं होती हैं. So now we live in a society that is producing so many unnecessary things. हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहाँ पर लोग ऐसी बहुत सारी वस्तुएं बनाते हैं जो हमारे जीवन में बिल्कुल जरूरी नहीं है. Just I was telling the devotees earlier that in the USA less than 2% of the people are involved in agriculture. तो अमेरिका में 2% से भी कम लोग हैं वो खेती में लगे हुए हैं. When I first came to India, 90% of the people were producing agriculture. तो मैं जब पहली बार भारत में आया तो भारत में 90% लोग हैं खेती ही करते थे. But the leaders were thinking this is backwards. तो हमारे नेता है विचार करने लगे कि ये तो पछात जीवन है. We need to progress. हम लोगों को विकास करना है. At that time, I remember I would walk around in the fields
and the farmers were doing everything simply and practically organically. तो उस समय मैं खेत में ज़्यादा तो देखता था कि सभी जो खेडूत है वहाँ किसान वो सब वस्तु है स्वाभाविक रूप से ही सब पौधे लगाते थे, नेचुरल था, कोई दवाइयों का छिड़काव नहीं होता था. Because when agriculture is done in very small plots of land, people can take care of the crops very nicely without dangerous and poisonous chemicals. तो छोटे-छोटे खेत में जब किसान काम करता है तो उनको ऐसे रसायनों की आवश्यकता नहीं होती जो जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं. But when we have big fields of 300, 500 acres, then they have to use so many chemicals. तो जब 300-500 एकड़ का बड़ा खेत होता है तो उसको संभालने के लिए हमें फिर बहुत सारे रसायन भी चाहिए. And because there are not enough trees, then the birds will not eat the insects, so we have to put chemicals to kill the insects. तो बहुत सारे जब पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो पक्षी भी कम होते हैं, अन्यथा वो पक्षी ही छोटे-छोटे कीड़ों को खा लेते हैं और इसलिए हमें कीड़ों को मारने के लिए फिर दवाइयाँ लगानी पड़ती हैं. And we're eating that every day. और हम ऐसे दवाई वाले ही सब खाना जो है हर रोज खाते हैं. And then we wonder why so many people are getting sick. और फिर हमें आश्चर्य होता है कि क्यों लोगों को बीमारियां हो रही हैं. Of course, disease is always there. ये सही है कि रोग तो हमेशा होते हैं, but now so many diseases are caused by artificial living. पर अभी जो बहुत सारे रोग हैं वो हमारे कृत्रिम जीवन के कारण ही हो रहे हैं. So what we call progress is actually digression. तो अभी जिसको हम विकास कहते हैं वो एक्चुअली पतन की ओर हम जा रहे हैं. One of our great acharyas, Narottam Das Thakur, he said that human beings are the most dangerous animals. तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सबसे अगर खतरनाक प्राणी है तो वो मनुष्य है. They are very envious of each other. और ये प्राणी ऐसा है कि एक दूसरे की हमेशा ईर्ष्या करता है. Among all the animals, the most envious one is the snake. तो सभी प्राणियों में जैसे सांप है वो एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं. But we see here in India, people have a cobra in a little basket. They can train the snake. तो यहाँ पर हम देखते हैं भारत में लोग है एक टोकरे में कोबरा जो है उसको पाल कर रखते हैं. But you cannot train an envious human. पर कोई अगर ईर्ष्यालु आदमी है तो उसको ऐसे टोकरे में रखकर उसको समझाया नहीं जा सकता. And envy, just like we have the Bhagavad Purana, Srimad Bhagavatam, it begins by saying that real religion means dharma projita kaitavatra. It means religion without any cheating or without any ulterior motive. तो श्रीमद् भागवत पुराण में शुरुआत में बताया गया है कि परम धर्म का वही है कि जिसमें कोई चीटिंग नहीं है, धोखा नहीं है और कोई ईर्ष्या नहीं है. And to understand it, there's one very important qualification. और एक ही उसकी योग्यता है परम धर्म को जानने के लिए. Paramo niratsaranam satam. We must be free from envy. तो ऐसा परम धर्म है, उसका एकमात्र लक्षण है कि उसमें कोई ईर्ष्या नहीं होती है. And Krishna says in the beginning of the 9th chapter of Bhagavad Gita, idam tatte guyatamam pravaksham yanasuyave, that I will give you this deeper understanding, but because you are free from envy. तो भगवद गीता में अध्ययनों की शुरुआत में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे किसी की ईर्ष्या नहीं करते हो. So to be free from envy, we have to all have the same common understanding. तो एक दूसरे से ईर्ष्या से मुक्त होने के लिए हमारी कोई सामान्य एक तो समझ होनी चाहिए. Another very important thing that we're trying to achieve here in this community is to establish the original social system of varnashram. तो यहाँ पर जो कृषि समुदाय है उसका एक और उद्देश्य है कि जो भगवान ने व्यवस्था बनाई वर्ण और आश्रम की उसको पुनः स्थापित करना. If we study history over the last 500-600 years, we will see there's always a struggle between socialism, communism, capitalism, and different isms. There's always a struggling. 400-500 साल के अगर इतिहास देखेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के भिन्न-भिन्न वाद है, जैसे समाजवाद है या मूढ़ीवाद है, राष्ट्रवाद है, या ये सब आपस में लड़ते रहते हैं. But the varnashram system, all of these things are included. तो वर्णाश्रम जो धर्म है उसमें सब वस्तुएं समाहित हैं.
the Brahmins are, within the Brahmins, there is democracy. तो जो ब्राह्मण हैं उनमें आपस में है लोकशाही होती है, Among the Kshatriyas, there is monarchy. और क्षत्रिय जो है उस पर राजाशाही होती है, Among the Vaishyas, there is capitalism. और जो वैश्य है उसमें आपस में है वो मूढ़ीवाद रहता है, And among the Shudras, there is communism. और जो शूद्र है वो उसमें आपस में है साम्यवाद रहता है. And the sages, they are, what's that called? They are free, they have no identification. और जो महात्माएं हैं उनकी कोई ऐसी पहचान नहीं होती, वो सब से परे होते हैं. So in the Varnashram system, everything is included and works in harmony. तो वर्णाश्रम जो धर्म है उसमें सब वस्तुएं हैं समाहित है और सब आपस में समन्वय होकर काम करती हैं. And in human society, there is one revolution after another. और मानव समाज में हम देखते हैं कि एक क्रांति होती है उसके बाद दूसरी क्रांति होती है, And never satisfied. और कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है. Just like in the area where I work, Venezuela has now become socialist communist. तो जहाँ पर मैं रहता हूँ काम करता हूँ वेनेजुएला, तो वहाँ पर अभी समाजवाद जो है उसका प्रचार हो रहा है. And Cuba has been socialist communist for the last 70 years, but no success. No. तो क्यूबा नाम का जो देश है वहाँ पर भी समाजवाद और साम्यवाद का चल रहा है, पर वहाँ कोई सफलता नहीं मिली. But people are so frustrated that they keep trying. No, we just have to change the system and it will get better. तो वहाँ पर है सरकार विचार करती है कि हम सिस्टम बदलते रहेंगे तो कहीं कभी न कभी हमें लाभ मिलेगा. The great scientist Einstein, he said, insanity means you try to do the same thing and get a different result. तो महान वैज्ञानिक जो है आइंस्टाइन, उन्होंने कहा कि पागलपन उसको कहते हैं कि एक ही वस्तु करते रहो और अलग अलग आपको परिणाम मिले उसकी आशा रखो. And we are all doing the same thing. और हम सब लोग भी वही कर रहे हैं. Eating, sleeping, mating and defending. आहार, निद्रा, भय और मैथुन हम करते हैं. But even whether you eat, and let's say we have some khichdi, and if you eat it on a golden plate or a silver plate or a paper plate, it will taste the same. तो जैसे आप खिचड़ी खाते हैं, मान लीजिए कि सोने की थाली में खिचड़ी रखी है, चांदी की थाली में खिचड़ी रखी है या पत्तल में खिचड़ी रखी है, सबका स्वाद तो एक जैसा ही होगा. Our eating and sleeping, etc., will be the same no matter if we do it in a huge, luxurious home or in a hut. तो आप चाहे बड़े महल में रहकर आहार निद्रा भय मैथुन करो, एक सामान्य झोपड़ी में करो, एक जैसा ही है. I see the dogs sleeping on the street. Generally, they seem to be sleeping better than the humans. तो ये कुत्ता जो है गलियों में सोता है, वो शायद हमारे से अच्छी नींद प्राप्त करता है. Their cars are driving by and they're just sleeping like anything. तो वहाँ से बहुत सारे व्हीकल भी जा रहे हैं, फिर भी वो आराम से सोता रहता है. And our minds are so stressed out that everything bothers us. और हमें बहुत सारी चिंताएं रहती हैं हमेशा. And this is actually the greatest cause of disease in the world is stress. तो ये जो चिंताएं हैं उसी के कारण अभी दुनिया में बहुत सारे रोग हो रहे हैं. Even Ayurveda says that anxiety is the seed of all diseases. तो आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो चिंताएं हैं वो रोग का मूल है. And we have created a society where everyone lives in anxiety all the time. तो हमने ऐसा एक समाज बनाया कि जहाँ पर सभी लोग चिंताग्रस्त हैं. Srimad Bhagavatam says, Vayam Dvitiya Viniveshata Syat Ishara Pitasya Vipariro Ashmiti, that when we take the secondary cause, which is Maya, as being the cause of something, that causes bhayam, fear and anxiety. तो जो माया है उसको ही हम है जो द्वितीय गौण कारण है उसको ही प्राथमिक कारण गिन लेते हैं, तब हमें भय उत्पन्न होता है. And when that happens, when we're in anxiety, then ishara pitasya viparyayo, everything is put into reverse. Instead of accepting Krishna and what he says, we try to tell Krishna what to do for us. तो हम कृष्ण की बात को स्वीकार करने की जगह पर क्या करते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे लिए क्या करो, तो हम सब है उल्टा कर रहे हैं. Now people come to the temple and they offer maybe some coconuts, some bananas, something, and they expect, I give you coconut and bananas,
and you give me a house. तो लोग हैं मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने एक श्रीफल चढ़ाते हैं और केला चढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि भगवान आप मुझे एक बड़ा घर दे दीजिए. So we must think that Krishna is a very bad business person. तो लगता है कि कृष्णा अच्छे व्यापारी नहीं है क्योंकि सिर्फ मना. Or he's, as they say, a pushover, no? So he's so foolish that we give him a little something and he has to give us everything. तो क्या क्या कृष्ण ऐसे मूर्ख नहीं है कि हम उनको सिर्फ एक श्रीफल और केले दे दे और वो हमें बहुत बड़ा मकान दे दे. But Krishna actually, he says, I will give you so much more than you can give me. No? तो कृष्ण तो कहते हैं हरिकृत में मैं इससे भी बड़ा वस्तु दे सकता हूँ आपको. He says, Yeyatamam pravatyante tamstataiva pachamyaham. That whatever you give me, I will give back to you in the same proportion. तो आप जिस प्रकार से भगवान के पास जाते हो, जिस भाव से देते हो, उसी भाव से भगवान भी आपको देते हैं. But sarvadhamam parityaja mamikam sharanam vraja. But if you surrender to me, if you give me 100%, I can give you unlimited. तो अगर 100% आप आ जाते हैं मेरी शरण में, तो मैं आपको अनंत गुना लाभ दूंगा. And what kind of 100% is Krishna asking for? तो 100% क्या है वो? Patram pushpam phalam toyam. No. तो वो 100% में भगवान क्या मांगते हैं? पत्र, पुष्प, फल और जल. Yeah, just give me, just with all of your sincerity, give me even the most simple thing. तो बहुत ही गंभीरता से अगर हम हैं, तो सर्व वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं. And there's only one ingredient that has to be there, yome bhakta prayashati, that it has to be done with love, with bhakti. कुछ भी हम भगवान को देते हैं, उसमें एक वस्तु तो होनी आवश्यक ही है, और वो है प्रेम. And I will give you everything. और अगर ऐसा आप करते हैं, तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा. And what is everything? और वो सब कुछ क्या है? He's not talking about money or possessions. He will give you, he will fill your heart with complete satisfaction. तो वो सब कुछ क्या है? पैसे है, मकान है, नहीं. वो है आपके हृदय में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा. So this is what, and here we see Krishna is giving us everything we need. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसी व्यवस्था की है कि सब कुछ वो दे रहे हैं. Because what do we actually need? हकीकत में हमें आवश्यक क्या वस्तुएं होती हैं? 2 meters by 1 meter space. 2 मीटर बाई 1 मीटर का जो है जगह हमें चाहिए. Some food, some medicine. थोड़ा सा खाना, थोड़ी सी दवाइयाँ. Some clothing. कुछ कपड़े. We don't need anything else. और कुछ हमें नहीं चाहिए. But the one thing we need is Krishna. और एक ही वस्तु की हमें जरूरत है, वो है कृष्ण. And therefore this Krishna consciousness movement is here to give them the real necessity of life. तो कृष्ण चेतना भावना का ये आंदोलन है, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो प्रदान करने के लिए हमारे पास है. And that is Krishna Prem. और यही कृष्ण प्रेम है. So that is what we can offer to all of you. We are ourselves are cultivating it, but to the degree that we can be successful, our only desire is to give it to all of you and everyone. तो यही वस्तु हम भी कर रहे हैं और आपको भी यही वस्तु दे सकते हैं. Because this is the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का एक आंदोलन है. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. That Lord Chaitanya simply came to give Krishna Prem to everyone. तो चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण का प्रेम सबको देने के लिए. So I'm very happy that you come here today, and I hope that it will leave a lasting impression, and you can support this community and this effort, not just this community but everywhere, that we have to establish these communities to show what is the actual way that human beings can live and be happy. तो आप इस समाज से जुड़ सकते हैं, इनको मदद कर सकते हैं, जिससे हम ऐसा समाज बना सकें. So I was telling the devotees this morning, I'll conclude with this, that when I was in Brazil many years ago, we started a farm called Nova Gokula. तो मैं भक्तों को बोल रहा था सुबह कि ब्राज़ील में जब मैं था कई साल पहले, तो हमने वहाँ पर एक कृषि समुदाय चालू किया था जिसका नाम नव गोकुल था. In the beginning, I was miserable for the first month. तो एक महीना मुझे काफ़ी तकलीफ हुई. Getting bit by bugs,
so many inconveniences of nature. I thought nature is being very cruel. तो कभी कभी मुझे कीड़े काट लेते थे और मुझे लगता था कि प्रकृति है बहुत मेरे पर है अत्याचार कर रही है. But after 1 month, I got used to everything, and then I went back to the city, and it was like going to hell. फिर 1 महीने के बाद सब ठीक हो गया और फिर मैं सिटी में गया तो मुझे लगा कि मैं नरक में जा रहा हूँ. So if all of you stay here for 1 month, you will have the same experience in Baroda. अगर यहाँ पर 1 महीना आप रहेंगे तो आपका फिर सिटी में जाने का मन नहीं करेगा, आपको भी ऐसा लगेगा. Once we get out of that atmosphere of anxiety and passion and ignorance, and we actually become accustomed to goodness, then we see what is the real atmosphere, the favorable atmosphere for human progress. तो एक बार हम वो वातावरण छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में मनुष्य जीवन की विकास का अनुभूति क्या है. Even if you stay for 2 or 3 days, you'll see so much difference. तो यहाँ पर 2-3 दिन भी कोई व्यक्ति रहता है तो उनको बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है. Sometimes though, we're so affected by passion that we think, what's there to do here? No. तो पर हम इतने प्रभावित थे कि हमें यहाँ आकर ऐसा लगेगा कि क्या करूँ अभी यहाँ पर. No television, no. यहाँ कोई टीवी नहीं है. How will I survive? No. कैसे मैं? I remember some years ago, before they had smartphones, then I would get on an airplane, and when they were taking off, you had to turn off your phone. No. तो पहले तो था कि एरोप्लेन में जब बैठते थे तो फोन बंद करना पड़ता था. And as soon as the plane took off, now you can use your phone or your computer. Everybody, फिर अनाउंसमेंट होता था अब आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, तो तब लोग बाहर निकलकर उसका प्रयोग करने लगते थे. But these are just addictions. पर ये एक आदत है और कुछ नहीं. Just like the drug addict, they cannot live without their drug. जैसे नशा होता है एक ड्रग का, तो उसी प्रकार का एक नशा हो गया है. So the techno addicts, they can't live without their machines. तो ये मशीनों की आदत हो गई है सबको. But it's all in the mind. ये सब है मन में है. So we just have to make our mind peaceful by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And then our mind will become peaceful, and Krishna will be able to enter. There'll be no more interference. तो महामंत्र का जप करेंगे तब ये मंत्र है मन शुद्ध हो जाएगा और कृष्ण हमारे मन में प्रवेश करेंगे, फिर कोई चिंता नहीं रहेगी. So thank you all very much for your attention. सबका आभार. Anyone have a question? आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. Take over that whether it's possible or not, and my inner gut feeling says that it's a service because I'm helping people. So how do I convert that act of business into the service to like devotion to Krishna? You want to say that? उनका ये प्रश्न है कि मैं बिजनेस करती हूँ तो एक रहता है कि मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, कुछ पैसे बनाना है, और दूसरा है कि मैं दूसरों को मदद कर रही हूँ, तो कैसे अपने बिजनेस को भगवान की सेवा बना सकते हैं. Srila Prabhupada said that the secret of success in Krishna consciousness is just to add Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सफलता का शुरुआत होता है कि आप पहले तो अपने जीवन में कृष्ण को डालिए. Krishna says, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Everything material and spiritual is coming from me. So we just have to offer it back to Krishna. तो सब कुछ भौतिक है, आध्यात्मिक कृष्ण का ही है, तो शुरुआत यहाँ से होती है कि हम उसको कृष्ण को अर्पण करें. Otherwise, everything we're doing, we just have to Krishnaize it. तो हम जो भी कर रहे हैं उसको उसमें कृष्ण को लगा दें. Krishna, Srila Prabhupada's classic example was like an iron rod. You take an iron rod, you put it in the fire, and even though it's still an iron rod, it has all the qualities of the fire. तो जैसे कि एक लोहा है, उसको आग में डालते तो कुछ समय पर वो लोहे का सलिया भी आग जैसा बन जाता है. तो कोई भी वस्तु कृष्ण में बनाएंगे तो वो भौतिक होगी तो भी आध्यात्मिक बन जाएगी. So we take our desires,
we take our habits, we take our activities, and we offer them to Krishna, and they become spiritualized. तो जो भी वस्तुएं हम हैं भगवान को अर्पण करते हैं तो वो आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करती हैं. Of course, there may be a few habits that will be difficult to spiritualize. तो कई आदतें ऐसे हो सकती है कि जिनको आध्यात्मिक बनाना संभव नहीं है. Like if I like to watch soap operas, like television soap opera, I don't know what you call them in कोई एक सीरियल देखना चाहता है टीवी में तो उसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते. Then you may have to change a little bit. पर आपको उसमें बदलाव करना पड़ेगा. Just like one man in Delhi now, he's making a beautiful movie about Lord Nrsimhadev. Anyone who sees that movie will understand the glory of Nrsimhadev. तो जैसे कि दिल्ली में एक भक्त है वो नरसिंहदेव के ऊपर एक फिल्म बना रहा है तो उससे लाभ होगा. उसका इश्यू नहीं. बैटरी डाउन. What happened? Yeah, just okay. Technical. So it's just a question of making everything, understanding that everything is here for Krishna's pleasure. तो हमें बस यही समझना है कि सब कुछ भगवान के आनंद के लिए है. Yes. शहर में रह के सिंपल जीवन कैसे जिए? यहाँ पे तो जैसे शहर में रह के कैसे सिंपल जीवन जिए? तो शहर सिटी में रहकर हम सरल जीवन कैसे जी सकते हैं? How to live a simple life while staying in city? What's that? While staying in city, how to live a simple life? By staying in the city, how can we be Krishna conscious? Or simple life, lead a simple life in a city. Simple life. You just simplify your life as much as possible. तो आप अपने जीवन में सरलता लाइए. जो भी आप करते हैं उसके ऊपर साधनों के ऊपर कम से कम निर्भर रहे. We live with less luxury and more necessity. तो हम जितनी जीवन में ऐशो आराम की वस्तुएं उसको कम कर दें और जो जीवन में आवश्यक वस्तुएं हैं उसको ही अपनाएं. Just like Mahatma Gandhi said one time that if we try to get what we want, there's not enough in the whole universe for one person. तो अगर है जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर सब कोई व्यक्ति है अपनी इच्छाओं को पूरा करने चाहे तो दुनिया में इतनी वस्तुएं भी पर्याप्त नहीं कि कोई एक व्यक्ति की सब इच्छाएं पूरी हो सके. But if we take what we need, there is more than enough for everyone. पर सब लोग की अपनी आवश्यकता के अनुसार ही जो अपनाएंगे तो दुनिया में सबके लिए पर्याप्त वस्तुएं हैं. If we analyze our lives, we'll see we're always missing something. I just need this. If I just had this, we're always lacking. हमारे जीवन का विश्लेषण करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमेशा ये अनुभव होता है कि मेरे जीवन में ये वस्तु की या वो वस्तु की कमी है. And you see all this propaganda on television and magazines. You must have this. You have to have this. और सिनेमा में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पर यही प्रचार चलता है कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास वो होना चाहिए. So actually what we have done is created a society of greed. तो हमने एक लोभी लोगों का एक समाज बना दिया है. And greed creates envy, anger, frustration. लोभ के कारण ही ईर्ष्या होती है और क्रोध आता है और लड़ाइयाँ होती हैं. So everyone is fighting with one another, trying to get more. तो सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिल जाए. और कोई प्रश्न है तो बताइए. हाँ. मोबाइल तो सिटी में वो इजी कर दिया हमारा काम, तो ये कैसे उसको अलिप्त कर सकते हैं मोबाइल की सेवा? How to get rid of mobile? ये इजी कर दिया ना, बैंक में ट्रांजेक्शन उसी वजह से तो कोई मर्चेंट का Bank mobile helps in many ways in our lives. Just to add something, technology is helping us to live better, right? So how we can get rid of the technology, right? When I grew up, there was no mobile phone. I survived. जैसे बहुत सारे लोग भी इससे पहले जीवन जिए हैं और यहाँ पर भी लोग बहुत सारे लोग सरलता से जीवन जी रहे हैं. हम इसके पर इतने निर्भर हो चुके हैं इसीलिए. Just like we were talking today, how some of the farmers nearby, they're thinking, oh, how can you grow food without chemicals? तो यहाँ पर जैसे हम है रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं तो दूसरे खेडूत आकर कहते हैं कि कैसे हम है रसायनों के बिना खेती कर सकते हैं. But 70 years ago and for thousands of years before, millions of years before,
people were growing food without chemical. तो कुछ सालों पहले और कई सदियों पहले तो कभी कोई रसायन थे ही नहीं कि जिसका प्रयोग खेती में किया जाता है। So these technological things, they grow on us, and then we think that it's necessary. Just like these young girls and boys, they think, how can one survive without a mobile phone? तो अभी इससे हम इतने हावी हो गए हैं कि हमें लगता है जैसे बच्चे हैं उनको लगता है कि उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। But I find my mobile phone is a big distraction. और मुझे लगता है कि जैसे मेरा मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ा एक विचलन है। Just like when I was younger, we would write a letter, and you would get a letter, you'd have some time to think about it. Now people send you a message, they want immediately an answer. No. तो पहले तो कोई पत्र आता था, फिर आप विचार करते थे और आराम से विचार करके लिखते थे। अभी वो तुरंत आप है उत्तर दे देते हैं और फिर संकट में आ जाता है। And this destroys people's concentration. तो इससे व्यक्ति की एकाग्रता है वो नष्ट होती है। It's like I see everything all the time, looking. तो बारंबार ऐसे लोग हैं विचलित होते रहते हैं। And so much distraction. So nowadays we find among young people that what do they call it? ADD, the Attention Deficit Syndrome. तो अभी एक मानसिक रोग है कि जिसमें लोगों का बिल्कुल ध्यान किसी वस्तु में लगता ही नहीं है। It's becoming a big problem, especially among young people. तो खासकर युवा लोगों में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। They can't concentrate, तो उनका एकाग्रता है ही नहीं। So many distractions. बहुत सारे विचलन हैं। When I was growing up, there wasn't even any television. तो मैं जब छोटा था तब तो कोई टीवी भी नहीं थी। A young boy, we didn't know what television was. मुझे पता भी नहीं था टीवी क्या होती है। So this is, and now all these things seem normal. तो अभी ये सब वस्तु सामान्य हो गई है। But when 200 years ago, everyone was farming. तो 200 साल पहले तो सभी लोग खेती कर रहे थे। There were only a few people that were doing other things. और बहुत कम लोग थे कि जो और कुछ कर रहे थे। There were only a few cities here and there. कुछ नगर और सिटी हुआ करते थे। And even when we see descriptions of Dwarka, the original Dwarka, it had beautiful parks and lakes, not like all these buildings crowded together, and you can't even look out your window, you just see another balcony. तो सिटी नगर जो द्वारका नगर का वर्णन आता है भगवान की नगरी का, तो बहुत बड़े बड़े मार्ग हुआ करते थे, बगीचे हुआ करते थे, सरोवर हुआ करते थे। आज तो आप अपने खिड़की खोलते तो सामने दूसरी खिड़की दिखाई देती है। So this is what we've created. तो ये सब हमने बनाया है। Just like the other day in Mumbai, it took me 3 hours to go 10 kilometers. तो मुंबई में मुझे 10 किलोमीटर जाना था, उसके लिए मुझे 3 घंटे लगे। So this is progress. तो ये विकास है। Very slow progress. तो बहुत धीरे-धीरे हम प्रगति कर रहे हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Any other question? कोई और प्रश्न है तो बताइए। Yes. सर ये आज का जो नई पीढ़ी है, जैसे आज वो ज़्यादा भटका हुआ दिमाग है उसका, ज़्यादा ही वो एडिक्शंस के ऊपर जा रहा है। और क्या आपकी क्या सलाह है, क्या करना चाहिए उसको? People are going towards like many kinds of addictions, like youngsters. The what? I'm sorry. Addiction. People have many addictions. Yes. So what is the solution? Well, they recommend, just like Alcoholics Anonymous, they recommend every. Alcoholics Anonymous. You are. I am a member of Alcoholics. He is a member of that Alcohol Anonymous. Okay. Yes. So every day they tell you, today you don't do this. तो Only हर रोज today. वो आपको बोलते कि आज आप मत पिए। So we have to do this with our material addiction. Today I will chant Hare Krishna. तो इसीलिए हमें एक आदत बनानी होगी कि आज हम है हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे। Don't say I will chant Hare Krishna for the rest of my life. That may become too difficult. तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको पूरे जीवन हरे कृष्ण मंत्र जप करने का कठिन लगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आज कम से कम माला कर लो। Today, and then next day you say the same thing. और दूसरे दिन भी यही करो कि आज भी हरे कृष्ण मंत्र जप कर लो। And then we will become addicted to Krishna. और धीरे-धीरे आपको कृष्ण की आदत हो जाएगी। Because people become addicted to something, it means addiction is natural.
और कोई वस्तु है उसकी आदत हो जाती है, मतलब वो स्वाभाविक लगता है। Just that we are addicted to the wrong thing. पर हम आदतें तो ठीक है, पर हम गलत वस्तुओं की आदतों में फंसे हैं। Krishna says, Maya sakta mana parta yogam yunjan marashrayaha. You become attracted to me. You become addicted to me. तो भगवान कहते हैं कि आप नशा करना है तो मेरा नशा कीजिए, And then you will be happy. और तभी आप खुश रहेंगे। आप करते हैं? हाँ, बोलिए। प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद के शिष्य रहे हैं, तो मैं श्रीला प्रभुपाद के पास से किस तरह प्रेरणा मिली जब वो उनके साथ थे? How you got inspired from Srila Prabhupada? She is asking. How you got inspired from Srila Prabhupada? Oh, I got inspired because I was suffering. तो मुझे प्रेरणा मिली क्योंकि मुझे कुछ कष्ट थे। I was in the university and I was thinking, what is all this? What is the use of all this study? And तो मैं कॉलेज में पढ़ता था और विचार करता था, ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसका फायदा क्या है? I was studying nuclear physics and all this complicated scientific data. तो न्यूक्लियर नाभिकीय जो भौतिक विज्ञान है उसका मैं अध्ययन करता था और वो बहुत जटिल हुआ करता था। So and then I thought, I will die and all this is for nothing. और फिर मेरा तो मृत्यु हो जाएगा और जो भी मैंने किया वो भी सब खत्म हो जाएगा। So then I saw the devotees and they gave me a magazine. और तब मैंने भक्तों को देखा, उन्होंने मुझे एक पुस्तक दिया। And I said, this makes sense. और मैंने वो पढ़ा और फिर मुझे लगा कि इसका तो अर्थ बनता है। And that's how it started. और इसी प्रकार से मेरी शुरुआत हुई। So we have to come to that point. Queen Kunti says, Tvama kinchana gochara. We have to become tired of material existence. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें ये निष्कर्ष पर तो पहुंचना पड़ेगा कि जहाँ पर हम ये समझे कि ये भौतिकता के कारण हम थक गए हैं और अभी मुझे कृष्ण के शरण की जरूरत है। As long as we think that material existence is wonderful, then it will be very difficult to be Krishna conscious. जब तक हम ये विचार करते रहेंगे कि भौतिक अस्तित्व बहुत मजे देने वाला है, तब तक तो हम इसी में फंसे रहेंगे। Material existence can be useful if we do it for Krishna. तो भौतिकता का लाभ हो सकता है अगर कृष्ण की सेवा में उसका प्रयोग किया जाए। Just like you said about cell phone, if we use it for Krishna, it can be useful. तो जैसे मोबाइल है तो कृष्ण की सेवा में उसका प्रयोग हो सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। Everything can be useful as long as it doesn't distract us from Krishna. If it brings us closer to Krishna, that's okay. तो कृष्ण के नजदीक जाने के लिए अगर कोई वस्तु मदद करती है तो ठीक है, उसका फायदा है, अन्यथा उसका लाभ नहीं है। That's how we can measure the usefulness of anything. तो कोई भी वस्तु का उपयोग वो उपयोगी है कि नहीं, इसी प्रकार से हम नाप सकते हैं कि कृष्ण की करीब हमें कितनी लेकर जा रही है। Srila Prabhupada used to always say, just like this microphone, it is technology. तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि माइक्रोफोन एक टेक्नोलॉजी है। But because I'm using it for speaking about Krishna, it has become Krishnized. तो अभी मैं माइक्रोफोन का उपयोग कृष्ण की कथा के लिए बोल रहा हूँ तो ये कृष्णमय बन गया है। और कोई प्रश्न है? और इस साइड में माता जी, पीछे किसी को प्रश्न है तो बताइए, इस साइड में। हाँ, एक और प्रश्न है, बोलिए। हाँ, Actually, I was hesitating to ask, but finally asked. Do you have any sort of some spiritual glimpse or supernatural experiences while chanting this throughout your? You have been associated with Srila Prabhupada for a very long time, so I read in so many books that while chanting this on a continuous basis, people have different kind of experience. If you would like to share or put some links on this, something like that. What was that last part? because you are chanting since long, do you have any spiritual experience? Like people have some kind of supernatural experiences. So, do you have any supernatural experience? Yes, that by chanting, I have become attracted to Krishna. That is my experience. That's my supernatural experience. तो मेरा सुपरनेचुरल जो अनुभव है वो है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के कारण मैं कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया। Just like one time they asked Srila Prabhupada
if he could do miracles. तो एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को पूछने लगा, क्या प्रभुपाद आप कोई जादू दिखा सकते हैं? And he said, yes, all these young boys and girls were materialists, and now I have made them into bhaktas. तो आप देखिए, मैंने भी जादू किया है कि ये लोग सब पहले भौतिकवादी थे, अभी देखो कितना परिवर्तन हो गया, अभी लोग सब भक्त बन गए हैं। He said, just like Ramachandra, he took monkeys and made them into soldiers. जैसे भगवान राम ने जो बंदर थे उनको लिया और उनको सबको सैनिक बना दिया। So we are Srila Prabhupada's soldiers to spread the holy name of तो Krishna. हम भी श्रील प्रभुपाद जी के सैनिक हैं भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए। But yes, the experience is that if you chant, you come closer to Krishna, and you feel Krishna within your heart, and you feel that Krishna is everything in your life. तो जब आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो आपको अनुभूति होगी कि कृष्ण ही सर्वोच्च वस्तु है आपके जीवन में। And when we say something supernatural, we have to consider what is natural. तो जब हम सुपर नेचुरल बोलते हैं तो पहले तो ये समझना चाहिए कि नेचुरल क्या है। Natural is to eat and sleep and try to become materially more advanced. तो सामान्य रूप से नेचुरल तो यही वस्तु है लोगों के लिए कि खाना पीना सोना और थोड़ी कुछ भौतिक प्रगति करना। So supernatural means to not do that. तो सुपर नेचुरल का अर्थ है कि ये सब वस्तु छोड़कर आगे बढ़ना। To transcend this natural tendency. तो ये जो सामान्य मानवीय कार्य है उससे ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन जीना। So I've seen that all the devotees that dedicate themselves seriously and sincerely to Krishna consciousness, they actually enter into transcendence. तो जो भी भक्ति में लोग भक्त लगे हैं तो उनको भौतिकता से परे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त किए हैं। But transcendence doesn't mean that we see things that other people don't see. तो यहाँ पर है सुपर नेचुरल या ट्रांसेंड का अर्थ ये नहीं होता है कि हमें कोई प्रकाश दिखाई दे या ऐसा कुछ अजीब सा अनुभव हो। But we see that everything belongs to Krishna. तो यही सबसे सर्वोत्तम अनुभव है कि सब कुछ कृष्ण का ही है। It's like Prabhupada gave the example, if a mother sees the shoe of her child, she thinks of the child. तो जैसे कि माता है बच्चे का चप्पल भी देखती है तो उसको अपना बच्चा याद आता है। So when a devotee sees anything, they think of Krishna because everything belongs तो इस to Krishna. संसार में भक्त कुछ भी देखता है तो उसको कृष्ण ही याद आते हैं क्योंकि सब कुछ तो कृष्ण का ही है। And I'll just quickly tell a story about this. This is a true तो उसके story. लिए एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ। There was a young boy in San Diego, California, and he became very attracted to the temple, and he was coming every day. तो ये एक कहानी है, कैलिफोर्निया में एक लड़का है वो भक्ति से आकर्षित होकर मंदिर आने लगा। And his parents came and said, "Oh, our son is not studying. He just wants to be in the temple." तो उनके माता पिता भी मंदिर आए और कहा कि अभी ये मंदिर आने लगा तब से वो पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ मंदिर आना चाहता है। So the devotees didn't want any problem. They told him, "You have to study." No. तो भक्तों ने आकर वो लड़के को बोला कि आपको पढ़ाई भी करनी चाहिए। But then the parents came again and said, "He's not studying," and he said, "I'm sorry, I can't. I just want to be with Krishna." तो माता पिता वापस फरियाद लेकर आए कि अभी भी बच्चा नहीं पढ़ता है। So his father became so frustrated, he took him to a psychiatric hospital. तो ये लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा था इसलिए उनके पिताजी है उनको मानसिक रोग के डॉक्टर के पास ले गए। And he interned him. He said, "Doctor, he's gone mad. He's just only wants these religious things." तो माता पिता ने फरियाद डॉक्टर को किया कि ये अभी भक्ति ही करना चाहता है और कोई वस्तु नहीं करना चाहता है, ये पागल हो गया है। So the doctor came in for the interview, and he said, "Do you see things differently than others?" तो डॉक्टर ने प्रश्न पूछा कि क्या तुम्हें कोई वस्तु दूसरे लोग देखते हैं उससे अलग कुछ दिखाई देती है? He said, "Yes." हाँ, तो उसने कहा हाँ मुझे अलग दिखाई देती है। And the doctor goes, "Okay. Do you hear things differently?" He said, "Yes." तो क्या तुम्हें दूसरे लोग जो सुनते हैं उससे कुछ अलग सुनाई देता है? तो कहा कि हाँ। And the doctor said, "Oh." फिर वापस दवाई लेके डॉक्टर ने। And the doctor said, "What about this flower?" No, and there was a flower on the table. तो एक वहाँ पर फूल का गुलदस्ता था तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्या है? And so the boy said, "Yes, you see the flower, and you see something pretty that smells nice." तो आपको फूल दिखाई दे रहा है, वो सुंदर है और सुगंधी है। But when I see the flower, पर मुझे जब फूल दिखाई देता है, I see
such a wonderful creation must have some greater intelligence behind it. तो तब मैं देखता हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है कि जिसने इसको बनाया है. No human being has ever created a flower. तो कोई भी मनुष्य है कभी फ्लावर फूल बना नहीं सकता ऐसा सुंदर. And he began to speak like that, and the doctor said, "Where did you learn this?" तो डॉक्टर ने कहा कि ये सब तुम्हें कहाँ सीखने मिला है? He said, "Bhagavad Gita." तो कहा कि मुझे गीता में से सीखने मिला. And they spoke for 2 hours. हाँ, तो 2 घंटे है वो बातें करते रहे डॉक्टर के साथ. Until the nurse came in and said, "Doctor, there's so many patients waiting. You have to take care नर्स of ने आकर कहा कि डॉक्टर दूसरे भी पेशेंट है बाहर है. So the doctor said, "Call the father, tell him to come and pick up the boy." तो डॉक्टर ने उनके पिता को बुलाया और कहा कि तुम अपने लड़के को ले जाओ. And so the father came and said, "Doctor, you're amazing. In one day you've cured my son." तो डॉक्टर ने कहा, माता पिता ने कहा कि आपने चमत्कार कर दिया, एक ही 2 घंटे में मेरे लड़के को ठीक कर दिया. And the doctor said, "He's the sanest person I've ever met in my life." तो डॉक्टर ने कहा कि ये सबसे सज्जन व्यक्ति है, बुद्धिमान है कि जिसको मैं मिला हूँ अपने जीवन में. He said, "You should listen to your son." और तो तुम्हें भी उनकी बात, माता पिता को बोला कि तुम्हें भी अपने बेटे की बात माननी चाहिए. And the father became so frustrated he had a panic attack. He started shaking and he fell on the ground. तो पिता जो थे उसको भी है दौरा आ गया और वो कांपने लगा. And so they committed him to the hospital. तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. So that's a true story. ये एक सही सच्ची घटना है. So when we become devotees, we see everything differently. तो जब हम भक्त बन जाते तो हर वस्तु हम अलग प्रकार की देखते हैं. And that is called transcendence. और यही है दिव्य अनुभूति है. Hare Krishna. हरे कृष्णा. So thank you all very much for your kind attention. And I hope I've been able to contribute something. And I hope that every experience in your life will enrich your Krishna consciousness. हरे कृष्णा. विशेष रूप से हम महाराज के आभारी हैं. श्रीला गुरु प्रसाद स्वामी महाराज की जोर से हम एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये भगवान की योजना थी. We were not planned, like your schedule was not planned here, and this event was just morning it was planned, and all of them as opportunity for this satsang. तो हम सबको कोई योजना नहीं थी महाराज का यहाँ आने का और हमारा सब साथ में संग हो, पर इतना अच्छा मौका मिला है प्रभुपाद जी के शिष्य वरिष्ठ शिष्य से सुनने के लिए. तो हम सब विशेष रूप से और उन्होंने जो भी हमें प्रवचन में बताया है उसको हमें जीवन में गंभीरता से लेना चाहे. और बहुत दुर्लभ ऐसा है कि प्रभुपाद जी के शिष्य से हमें सुनने को मिलता है. क्या और तो महाराज है पूरे विश्व भर में ट्रैवल करते हैं. तो जो भी भक्त है कुछ लक्ष्मी सेवा डोनेशन मतलब महाराज को देना चाहते दे सकते हैं. और इस प्रोजेक्ट में भी आए हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आगे बताएंगे. यहाँ पर भी आपको मंदिर है तो आप जो भी दान देना चाहते हैं दे सकते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna. We are so grateful to you. We are so grateful to you. Hare Krishna.